Jai Jagannath, hello friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. So +2 second day English फिले मिशन 2024 चालची आमे प्रथम पर्याय आमर प्रथम प्रोज पढ़ी सारी माइक टेस्ट ओलंपिक प्राइज ऑन एग्जामिनेशन पढ़ी सारी जार एग्जामिनेशन आज करे थिले ऑन एग्जामिनेशन तार रिजल्ट काली डिक्लेरेशन करवा एक्चुअली खाता मु देखि परली नहीं तो आसंता काली तार रिजल्ट डिक्लेरेशन हबो जो माने परीक्षाटा आज हिची तो आज गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा सेटा होची डैफोडिल्स पोएम गोटे स्टार्ट करवा. So Daffodil is a poem that is written by William Wordsworth. It is written by William Wordsworth. So William Wordsworth, the writer, William Wordsworth, and he was born in the year 1770. 1770 मसीहारे तांकर birth जन्म होइतिला केबे 1770. And died in the year 1850, 1850. This is his death anniversary, you can say. So 1850. And you know, is one of the major poets of his time. He is considered, William Wordsworth is considered as one of the major poet of his time. तांको समरो जने माने प्रख्यात कवि विख्यात कवि बोली तांको कहा जाउतला काकू विलियम वर्ड्सवर्थ को. He was honored, तांको सम्मानित करा जाइतिला. He was honored as England's poet laureates. Poet laureates, laureates कहले कोन पिले LAURA, laureates कहले सम्राट, कवि सम्राट. हां, poet laureate बा कवि सम्राट. आमे जेमती उपेंद्र भंजंगु ओडिशार कवि सम्राट बोली कहउचे से भलिया विलियम वर्ड्सवर्थ was considered as the poet laureate of England. And poet laureate LAUREAT जो मन लिखी न लिखी दवा LAUREAT. He defined poetry, and according to him, तांका हिसाब रे, according to him, poetry is nothing but it is the spontaneous overflow of powerful feelings. Spontaneous कहले स्वतः प्रवृत्त, overflow भितर उद्भासित होथवा, spontaneous overflow of पावरफुल फिलिंग मनुष्यर अंतर्निहित शक्तिशाली भावना गुड़िकर उद्रेक आविर्भूत हवा होची कविता. एंड इट्स अराइज फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. उठू आसे इट अराइज और अराइजिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. इमोशन कहले भाव प्रवणता, रिकलेक्टेड जहाँ संगृहित होइकी थाए इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी स्टैंड फॉर पीस. मनुष्य जेतेबेले शांत थाए, शांत थिला समय मनुष्यर हृदय रे जो भावना सब जागृत होइकी थाए, उद्भासित होइकी थाए, से जेतेबेले प्रतिफलित हुए लेखा माध्यम रे ताकू ही कविता बोली कहा जाए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट पोएट्री. कवि ए विषय कहते. सो एंड ही इज अ पोएट ऑफ नेचर. तांकु कौन कहा जाउथला? ही वाज अ पोएट ऑफ नेचर. प्रकृति कवि बोली कहा जाउथला. आमे जेमती ओडिसा रे प्रकृति कवि कहले गंगाधर मेहर को बुझुछु, सेही बलिया विलियम वर्ड्सवर्थ इन इंग्लैंड इज कंसीडर्ड एज द पोएट ऑफ नेचर, प्रकृति कवि. काहे कि एंड यूज कॉमन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, एंड हिज वर्ड्स, व्हाटएवर वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड बाय हिम इन राइटिंग पोएट्री, कविता लिखिबा बेले जो सब शब्द से व्यवहार करथिले, दीज आर कॉमन वर्ड्स. He was not believing in verbosity, माने शब्द बाहुल्यता ऊपर से विश्वास करू नथिले. He was not at all a believer of verbosity. He was using common words to express his feeling. तांको भावना व्यक्त करिवा पई से साधारण शब्द गुड़िकर प्रयोग करथिले के विलियम वर्ड्सवर्थ. तो वर्तमान आमे जीवा पिले सीधा टेक्स्ट ऊपर को. टेक्स्ट सेशन रे कोन लिखाई छी गोटे स्टांजा पढिबा आज, तापरे हमें आसंता काली कंप्लीट करिवा पोएम टाको. आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. कोन लिखाई छी आई WANDERED वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड. लुक एट दिस. आई कहले द पोएट, कवि निजे द पोएट. वंडर्ड कहले टू मूव एमलेसली, इतस्तत भाव रे वितरण करिबा, बुलिबा. वंडर्ड लॉनली
lonely कहले कोन एकाकी as a cloud केमिति how the poet was entering, the poet was entering like a cloud, a lonely cloud, like a lonely cloud माने एका एका बुलुथवा एक विक्षिप्त मेघ भलिया मु बुलुथा मु बुलुथिली I wondered lonely as a cloud that floats it is that ta kaha pai why the poet has used that is used for the cloud मेघ pai व्यवहार कराइछ so that floats high over vales and hills vales कहले कोन पिले उपत्यका hills कहले पहाड़ मेघ जेमिति उपत्यका ऊपर देकी बुले पहाड़ ऊपर देकी बुले as the cloud floats high over vales and hills उपत्यका ऊपर देकी जाए तार the cloud has no particular destination गोटे स्वतंत्र destination ठिकाना न थाए कहार मेघर मु सेमती बुलुथिली that floats कहले भासीबा floats on high over vales and hills when chetebele when what happens all at once कहले all of a sudden all at once कहले all of a sudden when all at once I saw मु देखिबाकू पाइली all at once I saw what a crowd पिले crowd ता गोटे collective noun आमे समस्त जानिछला crowd is a collective noun used for people but here crowd is not used for people crowd is used for the host of daffodils so group of daffodils से daffodil मान को व्यवहार कराई daffodil शब्दर वर्तमान पर्यंत आसी नहीं but next आसीबो next स्टैंजा लिखाला a host I saw a crowd I saw a crowd a host of golden daffodils सुना भलिया देखा जाउथवा स्वर्णिम रंगर डैफोडिल माननकु मु देखिबा पाई पाइली ऑल ऑफ ए सडन हठात मते देखा गला कोन स्वर्णिम रंगरे रंगायित होउथवा स्वर्णिम रंगरे रंगायित होउथवा डैफोडिल्स मु देखिली and what the color of daffodils it was golden yellow केमती गोल्डन येलो एहा सुना भलिया हळदिया देखा जाउतला चकचक करूतला ए होस्ट टा भी डैफोडिल मान को पई व्यवहार होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake कोठी देखिली मु पिले beside the lake beside stand for it's a compound preposition which means by the side of beside the lake ro parshore beside कहले parshore by the side of beside the lake beneath the trees beneath it is another compound preposition it stands for by underneath stand for beneath so beside the lake beneath the trees गच्छ तळे हृदर पार्श्वरे कोन थिले what were there daffodils पिले स्किप करबा नै मु आगु को ए जो स्टैंजा हमें पढिबा ए स्टैंजा रो क्वेश्चन आंसर सेशन अछि जहा जहा प्रोबेबल क्वेश्चन अछि सब क्वेश्चन रो उत्तर आलोचना करबा सो बिसाइड द लेक beneath the trees कोन थिला daffodil ओदिया fluttering 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 कहले कोन पिले मुंड टचिंग देयर हेड्स fluttering कहले टू toss their heads मुंड को मुंड तांकर से माने मुंड टुंगारु थिले those daffodils मुंड टुंगारीबा fluttering and आउ को करथिले fluttering and dancing in the breeze कहले पवन breeze मंद मंद पवन BREEZ breeze कहले माने आनंददायी पवन जहाको हम मंद मंद पवन कहबा मंद मंद पवन बहुतला आ से पवन रो ताले ताले ए डैफोडिल गुडा कोन करथिले दे वर डांसिंग इन द ब्रीज नॉर्मली हु डांस ह्यूमन डांस मनुष्य माने नाच करंती तो एठी पर्सोनिफिकेशन हेछि पुरुष भलिया व्यवहार करा जाई जी डैफोडिल्स को दिस इज पर्सोनिफिकेशन तो वर्तमान पे दिबा ठीक प्रश्न उत्तर ये थिला फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज हु आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज
The daffodils were fluttering and dancing in the breeze. Jadi question ase, what were the daffodils doing? What were the daffodils doing while the poet saw those daffodils? Eti answer aba, the daffodils were, fluttering and dancing in the breeze while the poet saw them. While the poet saw them. Ye thila prashna. Then I would prashna ipare, where did the poet see the daffodils? Where did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils beside the lake beneath the trees. The poet saw the daffodils beside the lake beneath the trees. I would question kona, where were the daffodils? Where were the daffodils? Daffodils mane keuthi thile? Where were the daffodils? The daffodils were, say saman uttara, beside the lake beneath the trees. Now the next question, when did the poet see the daffodils? When? Ketebele kabi daffodils mananku dekhile. When did the poet see the daffodils? Ketebele kabi daffodils mananku dekhile. While the poet was wandering like a lonely cloud, all at once he saw the daffodils. Answer? While the poet was wandering like a lonely cloud, he saw golden daffodils, or the host of daffodils, or the crowd of daffodils. Then now, what was the poet doing? What was the poet doing while he saw the daffodils? Bujela, what was the poet doing while he saw the daffodils? Next question. The poet was wandering like a lonely cloud. The poet was wandering like a lonely cloud while he saw the daffodils. Next question. What do the poet compare himself with? What do the poet compare himself with? Kabi nijaku kaha soito compare karichhanti? So answer ko haba, the poet has compared himself, or the poet compares himself with the cloud, or with lonely clouds. Now next question, how was the poet wandering? How was the poet wandering? The poet was wandering like lonely cloud. So ye sabu question thila. Now what is a simile? Here is a simile. I wander lonely as a cloud. Underline the simile. It is simile quote abhyavahara hai. I wander lonely as a cloud. It is jo rahila, which is a simile, or what is the which expression is being used with a simile. Now here you can say as a cloud, this part, because simile is part of metaphor, or you can say idioms. That is when we use, or when we compare using as and like. As our like lage ki ame kono season ko compare karu, ताको आमे सिमिली बरी कुआ जाऊ कहू तो एठी एज ए क्लाउड जेमती व्यवहार है ए एज ए क्लाउड होची गुडे सिमिली पिले आ एठी पर्सनिफिकेशन ता को जाईटी फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द बीच हियर पर्सनिफिकेशन इज बीइंग यूज्ड एठी पर्सनिफिकेशन व्यवहार है आ एठी गोटे पिला somebody was asking what is a hyperbole. Hyperbole is it's a part of exaggeration. When something is being exaggerated and stated, that is called hyperbole. So एठी अछि 10,000 saw I at a glance, say जो expression टा, that is a hyperbole. ए ऊपर भी आमे क्लास करबा आगु को पिले तो आजि पई एतिकी थिला आसंता काली ए चैप्टर सरीबा पर दिन या ऊपर टेस्ट करबा आ आसंता काली तमरो आदिर जो टेस्ट हेतिला आजि सेकंड वीकली टेस्ट तार रिजल्ट डिक्लेयर करबा. Thank you for watching. Stay tuned, Master of English. Bye.